biology class. I hope you are all fine. As you are aware of the current situation, so we should prevent ourselves from COVID-19. To protect yourself and others from this pandemic situation, we should follow the basic precautionary measures, which are: wash your hands with soap and sanitizers for 20 seconds, cover your face with mask, cover your mouth and nose while coughing and sneezing. In addition to these basic precautionary measures, we should eat a nutritious diet that minimizes high blood pressure, prioritize restful sleep, stay calm, stop smoking, and do moderate exercise regularly. Now let's move towards our today's topic, which is filtration. It is the continuity of the previous topic, passage of molecules into and out of cells. Filtration is defined as the process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the help of hydrostatic pressure or blood pressure. This is the diagram of blood capillary showing filtration through the cell membrane of capillary wall. This is capillary wall. Inside of the capillary, blood is present, and in blood there are many types of the molecules. Some are large molecules and some are small molecules. The material present outside the blood capillary is the tissue fluid. The blood pressure inside the capillary generates the pressure and allows the small molecules to move across the capillary wall of the capillary easily because the molecules are smaller in size. It cannot allow the large molecules to pass through it due to its large size. So this is the filtration process occurring in blood capillary. Next term is active transport, which is defined as the movement of molecules from an area of lower concentration to the area of higher concentration. The movement against the concentration gradient requires energy in the form of ATP. This diagram displaying the sodium-potassium pump present in the nerve cell, showing active transport process. Nerve cells are the cells of brain which allows the nerve impulse to pass through brain to the body parts. ब्रेन के सेल्स नर्व इम्पल्स और मैसेज जनरेट करते हैं और इस ब्रेन मैसेज को नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में होती है. नर्व सेल्स जब अपने अंदर से कोई भी नर्व इम्पल्स पास नहीं कर रहे होंगे उस स्टेज में इनको कहते हैं दे आर एट रेस्टिंग स्टेज. इस कंडीशन में ये कंसंट्रेशंस का मेंटेन रहना बहुत जरूरी है. लाइक द पर्पल डॉट्स शोइंग द सोडियम आयन एंड द ऑरेंज डॉट शोइंग द पोटेशियम आयन. सेल के अंदर पोटेशियम की हायर कंसंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, जबकि सेल के बाहर देयर मस्ट बी द लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन. इन कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेल पंप मौजूद होते हैं इनसे पोटेशियम आयन को सेल के अंदर की तरफ मूव करवाते हैं. Although cell inside the cell have higher concentration of potassium, so they move from lower to higher. इसी तरह वो सोडियम को सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करवाते हैं, जबकि बाहर पहले से ही बहुत ज्यादा सोडियम मौजूद है. मूवमेंट को जो कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, लोअर टू हायर होती है. ATP एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप. So, ये एक्टिव ट्रांसफर मेथड. Next term is endocytosis and exocytosis. Endocytosis is defined as process of cellular intake of bulky material by the enfolding of cell membrane. Cellular intake का मतलब है सेल का किसी भी मटेरियल को अपने अंदर लेके जाना अपनी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से. There are the two types of endocytosis: pinocytosis and phagocytosis.
फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेलुलर ईटिंग, जिसमें सेल बल्की मटेरियल और सॉलिड मटेरियल अपने अंदर लेके जाता है, और पिनोसाइटोसिस में सेल वाटर अपने अंदर लेके जाता है, सेलुलर ड्रिंकिंग। The next exocytosis is defined as process through which bulky material is moved out of the cell. सेल से बाहर निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। So this diagram showing the process of endocytosis and exocytosis. Whenever a bulky material comes near the cell, the cell membrane makes the invagination around it. सेल मेम्ब्रेन के पास जब कोई बल्की मटेरियल आता है, सेल मेम्ब्रेन खुद को उस मटेरियल के गिर्द इन्वेजिनेट कर लेती है, इनफोल्ड कर लेती है, और उस बल्की मटेरियल को सेल के अंदर ले आती है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम। सो दिस इज द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। And whenever there is a waste material present in the cell, it must be moved out of the cell. तो उस वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, और वो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर फूड वैक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है, और सेल से बाहर निकालने के लिए सेल मेम्ब्रेन के पास आता है, सेल मेम्ब्रेन इसको बाहर निकाल देती है। दिस इज द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। थैंक यू गर्ल्स।